The cow in India has long been revered as a holy animal by a vast segment of the religious majority. But never before did the animal receive such prominence amongst the political class as it did after the BJP-led NDA came to power in 2014. Under the gaze of Prime Minister Modi's administration, the cow rose to achieve political significance never reached before. As the status of the cow rose, so did the cases of vigilante groups fixing alleged cow traders in the name of protecting the cow. A 2017 Human Rights Watch report claimed that there has been a significant surge in cow vigilante violence since 2015. Other reports point to the vigilante violence specifically targeting religious minorities. 3 years after coming to power, in May 2017, the Modi government banned the trade of cattle for slaughter across the country, effectively bringing to a halt the multi-billion-dollar meat and leather industry. This despite the fact that killing cows for meat was already forbidden in most states across the country. And a month later, Yogi Adityanath, the newly elected Chief Minister of Uttar Pradesh, India's largest meat exporting state, cracked down on abattoirs. He claimed those that were being shut down had been operating illegally. The Supreme Court suspended the government's cattle trade ban in July 2017, but by then industries had been severely impacted. The vigilantism, the bans on abattoirs and tanneries, coupled to the demonizing of the eating of beef, led to questions being raised about the government's true intentions. Now, with general elections here, India Today travels the country to report on the politics of the cow and how it may or may not impact result 2019. In the run-up to the Lok Sabha elections, the Mewat belt of Rajasthan and Haryana has become a den of cow vigilantism. Several incidents of vigilantism has meant that there is a severe slump in the cattle trade market in Rajasthan. Incidents including that of beatings, lynchings and robberies in the garb of cow vigilantism has meant that cattle traders are apprehensive of indulging in buying and selling of cows. Over the last 5 years, Rajasthan has seen a rise in cases of vigilantism, with right-wing organizations taking law into their own hands in the name of cow protection. India Today visited the town of Tijara in Alwar district and found farmers and cattle traders in the region facing an onerous task, that of rogue cattle. Incidents of cow vigilantism have led to old cows being set loose because it was uneconomical for their owners to keep feeding them. Cultivators in the region have had to erect barbed wire fences to prevent cattle from destroying their fields. बिगर बाउंड्री के तो फसल होने ही नहीं देते। इसका तो बहुत रुपया का खर्चा है और ये तार मंगवाए थे गुड़गांव से तार बाउंड्री करने वाले आए थे। पहरे भी लगाते हैं, फिरवाली भी करते हैं, फिरवाल उनको भी ठेका दे रखा है। वे अपने बेचारे रात भर जंगल में डोलते हैं पशुओं को रोकते हुए, लेकिन फिर भी कहाँ रुक पाए, इतने पशु हैं यहाँ तो बहुत नुकसान हुए। कुछ आवारा छोड़ जाते हैं। नगर पालिका से कई बार भी ऑब्जेक्शन किया था मैंने कि इनको गायों को गौशाला में डलवाओ। अब वैसे एक कोई वो कहता है मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय, अब है किसी की भी नहीं। Jhaburam Rajoria has been battling the same problem in his fields. He claims he was forced to quit farming because of the number of rogue cattle in the area. बिल्कुल गौ तस्करी तियारा मुख्य बिंदु है और तियारा क्षेत्र में गौ तस्करी का धंधा बड़े जोरों पर है। जो मेऊ समुदाय के जो लोग हैं, बेचारे जो किसान हैं, जो गाय का भी पालन करते हैं, वे लोग रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उठाए पुलिस उनको उल्टा बंद कर देती है गौ तस्करी के मामले में। फिर यहाँ जो गोरक्षक जो दल है, उल्टा अगर कोई मेऊ समुदाय के किसान हैं
और वहाँ कोई उजाड़ हो जाता है, हमारे पशु उजाड़ कर देते हैं, तो उस पर गौ तस्करी का आरोप लगा के उसको ही बंद करा देते हैं। Locals in the region complain that the issue of rogue cattle has become a flashpoint. भक्त जो सड़कों मारपीट करते हैं, गाय नहीं ले जाते? नहीं, गाय क्यों ले जाएंगे? उनको सिवाय नेतागिरी और प्रोपगंडा करने के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं उनके पास। गौ माता की अगर व्यक्तिगत रूप से ये सोचें कि गौ हमारी माता है, तो गाय के प्रति वो आस्था दिखाए बस। जो हमारे इस खेत में 100 के लगभग गाय डेली बैठती है, उनके चारे की कोई व्यवस्था नहीं कर पाते, इनकी बीमारी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं कर पाते। Another outcome of the rise in cow vigilantism in Rajasthan has been the slump in cattle trade. Those who used to trade cattle at fairs complained that there aren't many buyers for cows. Today, they are forced to camp there for long in the hope of selling some cattle. The cattle market in Ramgarh, once a bustling trade market, today can barely manage a crowd. 75-year-old farmer Prem Yadav and his 2 sons have been rearing cattle for years. But now, politics around the cow has forced them to reconsider their trade. They say they have faced trouble not just from vigilante mobs, but even the police. जैसे कि हमें बहुत नुकसान पहुंचता है, इससे पुलिस वाले तंग करते हैं, हमसे छीना झपटी करते हैं, पैसे से भी ले लेते हैं गाड़ियों पे। 50-50, 60-60 हजार की, 40-40 हजार की आई है, 35-35 की, और जिन्हें कटे हुए ले जा रहे हैं वो किसान आदमी पर बच्चन ने पाल रहे हैं, और कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई मजूरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, एक्टरी नहीं, काय में लगे जागने बच्चा, और बूढ़े काय में लगे। The cattle market in Jaipur has also seen a similar slump, where once 6,000 to 7,000 cows were sold in a week, barely 2,000 are being sold today. Local farmers are forced to sell their cattle at a cheaper rate, as traders from neighboring Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh no longer visit. Rajasthan isn't the only state facing stray cattle trouble. In Uttar Pradesh's Barabanki district, the ground reality is worse. As the sun rises in Sandauli Umarpur village, these young boys get ready to head to their fields. Not to farm, but to help guard their cultivation from stray cattle. For 13-year-old Nadeem, education is not a priority now. A stick or a lathi has replaced his school bag as he spends the day chasing stray cows away. सुबह से हाँक रहे हैं, सुबह से पढ़ने नहीं जाते। पढ़ने नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते पढ़ने? ये साड़ हाँकते हैं, चर रहते हैं। किसका खेत है आपका? आप हमारा। किस चीज का है? गेहूं का। गेहूं का है जी। अच्छा, कितनी फसल खराब हो गई? 2 बीघा। कब से स्कूल नहीं जा रहे आप? 1 साल। 1 साल से नहीं जा रहे हैं। कौन सी क्लास में थे आप? 4 में। अब स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कब जाएंगे? जब फसल कट जाएगी। सर हम इंटर की पढ़ाई करते थे, ठीक है, और 2 बीघा खेती है हमारी, और हमारे जो पशुएं हैं, मतलब पशु उनकी वजह से नष्ट हो रही है। तो सर हम बताइए, पढ़ने जाएं, बाप घर में बूढ़े हैं, अब सर हम पढ़ने जाएं कि ये साड़ हाँके? तो हमने पढ़ाई सर छोड़ दी। सर समस्या ये है, आधी फसल हो रही है और आधी ही बचा पाते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर मतलब ये घूमते रहते हैं, यही हाँका करते हैं, और आधी तो मतलब चली जाती है। A small break from guard duty can cost someone dear. Vijay Kumar, a farmer from Parathia village, found out the hard way, because while he was away, stray cattle ate up his entire crop of wheat. हमारा 60-70 हजार का हो गया। 60-70 हजार रुपए का। कितने दिनों में ये नुकसान हुआ है? ये अभी मान कर चलिए, जब से वो है बस थोड़ा थोड़ा जगने लगा, बड़ा हुआ, बस तब से चरते हैं, दिन रात हाँकते रहते हैं। दिन रात हाँकते रहते हैं? जी। रात में भी हमने सुना है इस गांव में आप लोग सोते नहीं, यही करते? जी, रातों में हाँकते हैं, जब आते हो तब हाँका करो साड़। Despite the Yogi Adityanath government allocating around 447 crore rupees for opening gaushalas across the state and imposing an economic cess for cow protection, the menace of stray cattle seems to be on the rise. Angry farmers have warned the BJP
of paying the price in the upcoming elections. गेहूं भी चढ़ गया है तो गेहूं भी काटा लगा फिर भी उसमें गैया भी तड़प तड़प के चल लेती है। ये बताइए, ये जो सरकार ने गौशालाएं खोली हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने बजट दिया है, इससे कोई आप लोगों को फायदा हुआ है क्या? जानवर कम हुए? इससे सर कोई यहाँ असर नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं है, न जानवर कम पड़े हुए। चुनाव का समय है, क्या आपको लगता है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा इससे? जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो नुकसान हुई तो जब हमारे खेती चढ़ गया तो वोट के का दे के का न दे, जब खेती हमारे चढ़ गया तो का कर लिया हैं? The menace of rogue cattle has also led to fights amongst the farmers, as one accuses the other of pushing animals into the other's fields in order to save his own crops. यहाँ पे कोई आया ही नहीं और यहाँ पे फसल सब नुकसान होती चली जा रही है। यदि उनको भाई मारना पीटना, हम लोग हिंदू धर्म के क्यों गाय को मारेंगे तो है नहीं, वह खेदेंगे ही, और उससे और दूसरे भाइयों से जो बगल में खेत वाले उनसे भी झगड़ा हो जाता है, मेरे में क्यों खेत दिया, वो कहते मेरे में। अरे तो उनको कहाँ ले जाया जाए, उनको कहाँ भेजा जाए? आपस में भी विवाद हो रहा है, काफी विवाद हो रहा है, दंगे होते हैं जानवरों को लेके। While the government claims to have taken a special interest in the well-being of the much revered cow, India today found the ground reality to be slightly different. At a government-run gaushala in Jinhauli village, where 121 stray animals have been given shelter, most of the rescued animals seem to be unwell. भूसा, पानी और गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही यहाँ पर, न चोकर है न हरेरी है, क्या है यहाँ पर? चोकर हरेरी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो गाय की सेहत कैसे? सेहत गाय की डाउन हो रही है यहाँ पर, हम बात सही कहते साफ। मैडम से बोला जाए तो अरे हो जाएगा, कब हो जाएगा। कब बना था ये गौशाला? ये का 3 महीना। 3 महीने हो गए जी। ये बताइए कि अभी तक यहाँ पे किसी गाय की मृत्यु हुई है? जी मेरी। कितनी गाय मरी? अरे मर गई हैं 10-12 थोड़ी जैसे मेहमान। 10-12 मर गई हैं जी। तो कुल मिला के सुविधा नहीं दे रही है सरकार को? सुविधा कहाँ यहाँ दिया था? With the general elections here, the politics over the cow has peaked. The opposition has accused the BJP of ignoring the plight of the farmers and creating a hype about cow protection merely for political gains. Election issue, and why? Because it actually shows two things. One, the lack of commitment of the Yogi Adityanath government, that they earmark funds but they don't spend, and the second is corruption, that the funds which they earmark do not reach and are not used for the purpose of taking care of the cows. And then the Samajwadi Party has been talking that the cows are destroying crops, the farmers are forced to guard their cultivation even in the night, but no administration is taking any cognizance of the matter also, and Yogi Adityanath has to answer this in the election. हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ शेल्टर नहीं देना चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ काय के ऊपर राजनीति करना चाहती थी और उससे अपना राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरी करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम हो और चाहे गाय हो, इनसे कोई मतलब नहीं, उनके नाम पे सिर्फ ये वोट बटोरते आए हैं। However, the BJP has also blamed the opposition parties over this issue and has claimed it has in fact resolved the stray cattle problem in most parts of the state. देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने अवैध कारोबारों पर रोक लगाई, उन पर कार्रवाइयाँ की और हमने सभी प्रकार के अवैध कारोबार को बंद किया। हमारी कार्रवाइयों के चलते, कार्रवाइयों से प्रभावित होकर जो अवैध कारोबारी थे, क्योंकि उनके संरक्षक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष के लोग थे, तो उनके पास में वो परेशान हुए। ये पूरी तरीके से ये जो विषय है ये राजनीति के द्वारा प्रेरित विषय है, तो उन लोगों ने इस समस्या को पैदा करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निराश्रित पशु हैं उन पर काम करना चालू किया, जिले जिले में व्यवस्थाएं करना शुरू किया। It isn't just the farmer who is angry with the government in Uttar Pradesh. The tannery industry in Kanpur saw their thriving business falter to a stop. That was when the Yogi government shut down most of the tanneries from December 15, 2018 for a period of 3 months.
The state government claimed the decision was necessary to stop waste disposal in the Ganga ahead of the 2019 Kumbh Mela. But the tannery owners tell a different tale. For the last 7-8 years, we had been, the tanneries in Kanpur, Unnao and Banthar had been observing staggered operation of wet operations during the Snan days of the Kumbh Mela, and as a rule we were closing our units one day prior to the Snan. Quite many slaughterhouses have been closed, they are non-performing. As a result of that, ultimately there is going to be a tremendous shortage of hides. With the industry losing speed, those employed in Kanpur's leather industry are also facing the brunt. अभी क्या हाल है? अब अभी तो जो है जो भी हमारे मालिक खाने के देते हैं, जब से काम बंद हुआ है जब से परेशानी चल रही है। यही मन करता है कि क्या करें भाई, कुछ खुदकुशी कर ले, क्या करे क्या ना करे, कुछ जो है कुछ समझ में नहीं आता इसमें। आप बाहर से लोगों को बुला के उत्तर प्रदेश में कारोबार करने का न्योता दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो कारोबार चल रहा है, जो अंग्रेजों के ज़माने से ये कानपुर शहर बसा हुआ और ये ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसी के कारोबार की कमर तोड़ दी है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। The loss is going to be tremendous. We are, the units are losing money, the units are losing profit, और अगर ये हालात साजगार नहीं होंगे तो एज अ बिजनेसमैन जैसे हर एक ने तलाश किया है सभी तलाश करेंगे, और करीब 100 एप्लीकेशंस यहाँ से गई हैं बंगाल, और जिसमें अभी कुछ मंजूर हो चुकी हैं, कुछ और मंजूर क्या आपने भी अप्लाई किया है सर? हम भी इसी प्रोसेस में हैं, अभी इसी प्रोसेस में हैं, अभी हमारी कोई मंजूरी नहीं है वहाँ पर। बट आप भी जाना चाहते हैं बंगाल? मजबूरी होगी तो जाएंगे। Kanpur, which was known as the Manchester of Asia, is facing a huge problem of industrial migration. Most of the leather units are shut, and the daily wage workers belonging to different states are returning home. Those staying in the city are struggling for food. The large-scale tannery owners are shifting to Bengal. However, the small-scale businessmen are the worst affected, and they have very little hopes left for revival. The tannery industry in Kanpur is facing a downturn, and many tannery owners are seriously toying with the idea of shifting their factories to West Bengal. But the leather industry of Bengal is itself facing problems. The cattle slaughter ban and rising vigil over cows have deeply impacted their business. India's leather industry is among the top 10 foreign exchange earners for the country, employing close to 5 million people. So it is natural that the health of the leather industry remains crucial to the overall employment scene in India. The May 2017 Modi government ban on cattle sale for slaughter had had a direct bearing on procurement of raw material for the leather industry. 2 years down the line, industry representatives say things have stagnated. Lots of job has been lost. We as entrepreneurs, of course, we faced problems, but that was temporary. Raw materials were not there. There was a crisis. We had to depend upon imports. We found our way. We did it. But if you go to Raja Bazar, if you go to the big hearts that are there, Bildanga, you will get to see what has happened over there. The entire market that used to be put every Saturday, the heart, lakhs of people used to go to just procure materials, raw hides and skins worth crores of rupees. That has stopped. And who's suffering? People who had the warehouses, who used to stock, who used to cure these hides, used to put salt and pickle these and preserve these hides, they have lost their jobs. 826 गोडाउन थे, 526 था, 126। ये कितने साल, 2 साल? ये 4 साल 3 साल के अंदर
3-4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ। मेन कारण यह है कि मोदी सरकार आने के बाद जब 2014 में आए तो 15 से इन लोगों ने एक वातावरण, एक भय का वातावरण बना दिया कि जो गौ रक्षा हम करेंगे, हम मार रहे हैं लोगों को। गौ रक्षा हो नहीं रहा, सब गौशाला ऐसी पड़ा हुआ, गाय वहाँ मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक भय का माहौल, ये एक डर का माहौल जो बनाया, तो लोग वहाँ से अब चमड़ा, जो चमार वहाँ के बाहर के चमड़ा लाकर मुर्दा चमड़ा को, मुर्दा गाय को चमड़ा छील करके यहाँ भेजा करते, तो वो भी डर से हाथ नहीं दे रहे। बहुत से गोदामें बंद हो गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गया सब बेच बाच के चला गया लोग। तो माल नहीं आ रहा है अभी। माल भी नहीं आ रहा है, दाम नहीं मिल रहा है, लेने वाला कोई नहीं है। The government's slaughter ban has had a devastating impact on the leather industry in India. Here at a Hyde market in Kolkata, godowns like these, which generally store raw hide to supply to the tanneries, are lying empty. On a regular day, such godowns would be filled with raw material that comes in from across the country, and especially from North India. But what traders are telling us is that there has been a total collapse in the supply of raw material due to the fear of Go Rakshaks across the country, and therefore the trade has been impacted severely. India's leather exports declined more than 3% in the financial year 2016-17 and 1.3% in the first quarter of 17-18. Compare this to a growth of more than 18% in 2013-14. One of the aims of Prime Minister Modi's Make in India program was to increase leather exports from $5.86 billion in 2015-16 to $9 billion by 2020. A target which traders say is now clearly a distant dream. Now at the moment our growth rate is 6.5%, which was supposed to be 20%. But if I tell you indirectly, it is not a growth rate, it's a minus, because previously we were using domestic hides and skins and we were paying in the Indian currency. At the moment we are paying in the dollars. So we minus the dollar what we import from our exports. So the exports have gone down. We have to now change our market base and we have to go into countries such as South America. We have to import hides from South America. We have to import hides from France. Yeah, of course, at a higher cost, at premium prices. And we are giving our neighbor the competitive edge over this. Because Bangladesh, China, everything is going there. So what are we trying to do right now? Khan says entrepreneurs like him will soon be forced to shift their factories to countries like Cambodia or Vietnam, as governments there were giving incentives and subsidies to the leather sector. There were 30 crore bovine in India as per the 2012 cattle census. That figure must have gone up quite a lot by 2019. But what has also gone up is the discord over the cow. The redefining of the animal's status in recent years has not just aggravated social divisions, it has also impacted the health of the rural economy. The humble cow, the divine bovine, continues to punch much above its weight when it comes to impacting the idea that is India.